हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस हुई फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, उसके बाद कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लेटेस्ट कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग पावर ऑफ इश्यूएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148, whether power or jurisdiction has with जाओ दैट इज जुरिडिक्शन असेसिंग ऑफिसर और फाओ यानी फेसलेस यूनिट के पास है। तो 148 के नोटिस को इश्यू करने का जुरिडिक्शन किसके पास है, ये कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग ऑलरेडी 200 रिट पिटिशंस केसेस आर पेंडिंग विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और इसी कंट्रोवर्सी को लेके एक रीसेंट रूलिंग आई है फ्रॉम द ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट। और इस बैच में उन्होंने इतनी सारी रिट पिटिशंस को यहाँ डिस्पोज किया है ऑन दिस सोल ग्राउंड। अनफॉर्चुनेटली गुजरात हाई कोर्ट ने रूलिंग दी है कि जो जुरिडिक्शन असेसिंग ऑफिसर है उसके पास 148 इशू करने का जुरिडिक्शन है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फाओ इशू कर सकता है, जाओ के पास वैलिड जुरिडिक्शन है। सो यहाँ रेवेन्यू के फेवर में रूलिंग दी है ऑन दिस सोल इशू। सो आज के वीडियो में हम देखते हैं इस रूलिंग को कि गुजरात हाई कोर्ट ने इसके लिए क्या रीजनिंग दिया है। So this is the sole ground. This group of petitioner is arising from the common issue of assumption of the jurisdiction by assessing officer to issue notice after 1st April 2022 under section 148 of the Income Tax Act on the ground that such notice was issued by JAO and not by the faceless assessing officer. This is the sole controversy of this whole batch of petitions. So let's directly see the conclusions drawn by the Honorable Gujarat High Court. On perusal of the section 148, it is clear that the same is subject to the provision of 148A of the Act, except certain eventualities enumerated therein. In regular course, when an information is made available as per the explanation 1 of the 148 through risk management strategy formulated by the board, the case is required to be allocated through automated allocation as defined under Scheme 22. We are concerned with the clause B of the scope of the scheme, as assessment and reassessments are already taken care by the provision of section 144B of the Act in itself. So far as the issuers of notice under section 148 is concerned, after information is collected through the risk management strategy formulated by board, for the issuance of notice, the case is allocated through automated allocation to the AO. Therefore, the question arises as to who the assessing officer should be, whether jurisdiction assessing officer or the assessing officer of an assessment unit as per 148 4B of the Act. If we pursue section 144B, there is no AO as such, but it is also refers to the assessment unit, which comprises of the various assessing officers. If we pursue clause 1 of the subsection 1 of 144B, it stipulates that the National Faceless Assessment Center shall assign the case selected for the purpose of faceless assessment under section 144B to a specific assessment unit through automated allocation system prior to the selection of the case to be allocated to the specific assessment unit through automated allocation system. And 144B of that has no role to play for the purpose of faceless assessment. Therefore, the logical conclusions which can be deduced from the reading of the provision of the Act, together with the intention of the legislature and the Scheme 22, we are of the opinion that so far as the issuance of notice under Section 148 of the Act is concerned, the contention raised on behalf of the revenue based upon the Office Memorandum of the CBDT dated 20th February 23, which is even considered by the Honorable Bombay High Court, would be in line of the legislative intent so as to operate the two aspects separately. One by issuance of notice under section 148 by automated allocation, and other by the conducting assessment or reassessment proceedings under section 147 in a faceless manner to the extent provided under section 144B. In view of the above opinion, we are not analyzing the judgments rendered by the various high courts, as the line of reasoning adopted by us is totally different from that adopted by the various high courts by the interpreting the scope, intent and impact of the section 144B, which has been come into statute book with effect from 1st April 22.
In view of the foregoing reasons, so far as the issue with regard to the challenge of the assumption of jurisdiction to issue the notice 148 of the act by the JAO fails, and the notice is issued by the jurisdiction assessing officer under 142 after are held to be valid and legal. So far as the issues on merits are concerned, each matter shall be considered merit separately, hence registry to list the matters in due course separately so as to decide the same on merits as per the challenge on merits made in each matter. So here in given case, the co-reasoning given by the High Court is कि जो रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स है वो आफ्टर रीओपनिंग 144 में कंडक्ट की जाएगी इन फेसलेस मैनर, बट जो 148 की नोटिस इश्यू होगी विच इज़ प्रेसिडिंग इवेंट बिफोर रीओपनिंग एक्चुअल रीओपनिंग द केस, तो वो जाओ कर सकता है क्योंकि 148 ए का ऑर्डर है और 148 की नोटिस है, दोनों साइमल्टेनियस इवेंट है। तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि 148 ए का ऑर्डर जाओ करे और उसके बाद 148 की नोटिस फेसलेस यूनिट से इश्यू हो, दोनों साइमल्टेनियस इवेंट है। तो एज पर दिस मार्च नोटिफिकेशन अंडर फेसलेस रीअसेसमेंट स्कीम जो ऑटोमेटेड एलोकेशन मशीन है, जैसा कि एसएससी का कंटेंशन है कि फेसलेस मैनर में होना चाहिए, तो डैट इज एप्लीकेबल ओनली टू द एक्चुअल रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग एंड नॉट द 148 की नोटिस। सो दैट इज द क्रक्स or ratio drawn by the High Court. Gujarat High Court's take on the 148 Jao versus Pao controversy. Now let's कि सुप्रीम कोर्ट में जो अपील्स पेंडिंग है वो उसमें फाइनल वर्डिक्ट क्या आता है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।